Hello friends, I'm CACS Swati Agrawal and I welcome you all in my new video on another compulsory subject of 12th standard economics. Guys, पिछले वीडियो में I have discussed with you that Maharashtra State Board has changed the syllabus and not only for accountancy, yes, it has changed for all the subjects, and today we'll be discussing about economics, that what all changes have been made by the board and how these changes are relevant for you to relate it with in today's life. Guys, before we begin with the syllabus and the topics, I just want to tell you this is a subject which is being set up in the minds of the student as if it is a very theoretical subject and you just need to mug up things. But जिन लोगों ने 11th में economics पढ़ा है हमसे, so they all know how we can relate to the present economic scenario and the book syllabus which is there in your course. Let me tell you guys, the syllabus of 12th standard indeed is very interesting. Reason, इसमें आप डे टू डे लाइफ से भी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द नेशन in today's era. Guys, we all know because of the COVID situation, because of this corona situation, we all are sitting at home and most of us are watching news, reading newspapers, and there's a common news which is there in all the channels that it is a big economic or financial disaster which is happening in economy. What is the economic loss? What is the financial loss? These all things may come in your mind and at times you are confused कि क्या फर्क पड़ता है अगर सब कुछ बंद है तो, because obviously अगर कुछ expense हो नहीं रहे हैं तो और कुछ income आ नहीं रही है तो how it is a huge economic loss. ये सारी चीजें you will going to learn in your 12th standard. You will be able to understand the difference between micro and macro, and I'll give you a very brief introduction of every such thing with few of examples. If I talk about your subject, it is a 100-mark subject just like accountancy, and of which 80 marks is a written paper, 20 marks you will have some practical. Regarding economics, होता क्या है ये? So everything around us which we can see, which we can feel, any transaction which we do, all the things which we buy is all economic activities. Phil, what is micro and what is macroeconomics? So guys, micro is our day-to-day problems and how we can solve those problems. So घर का एक छोटी सी चीज जिसकी डिमांड है वो भी नहीं है एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट. यू कैन टेक वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शुगर. सपोज इन केस मम्मी इज कुकिंग फूड एंड उसमें कहीं पर कुछ शुगर का कंटेंट डालना है एंड शुगर हमें खत्म हो गया. अब क्या करें? इमीडिएटली मार्केट जाएं और लेकर आएं. आज की सिचुएशन ये है कि टाइम स्लॉट के बाद इफ समवन गोज टू द मार्केट ही कैन नॉट फाइंड इवन ग्रोसरीज. तो फिर क्या? कैन वी स्टॉप द वर्क? नो, विल फाइंड द सब्स्टिट्यूट. दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज जैगरी गुड, राइट? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, macro मतलब होता है big, and your syllabus is comprises of these two parts. The small problem, the problem of a good, a problem of a company, a problem of an industry is all covered in the microeconomics. When we talk about overall problem of the nation, then it covers in the macroeconomics. The word macro means big. So how our syllabus is divided in micro and macro, and is there anything else apart from these two parts? Yes guys, your chapter number 1, 2, 3A and 4 and chapter number 5 are parts from the microeconomics, जहाँ पर number 1 will be understanding the difference between the two. Number 2, what is utility and what is demand in chapter number 3. Normally ये दोनों वर्ड एक साथ पढ़े जाते हैं और हमें लगता है utility and demand is same, but there is a big difference between both the terms. Utility is something which satisfies someone. Demand एक ऐसी चीज है which never ends. Demand can be of any luxurious thing, but utility is need based, right? Then supply. We all know
अभी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी पर उनका सप्लाई कम था, जस्ट लाइक सैनिटाइजर, राइट, मास्क, some of the pharmaceutical products. So these are demand and supply mechanism which is also there in your syllabus. Let me tell you again, all these things can be relatable with our day-to-day life. The next and very interesting chapter, chapter number 6 is there in your syllabus, which is index numbers. अब ये क्या होता है? This seems little practical, calculations है इसके अंदर. एक word है आप सबने सुना होगा, inflation, महंगाई, right? So हम सुनते हैं महंगाई बढ़ रही है, expenses बढ़ रहे हैं. Some of the things which can easily be calculated कि एक पर्सन है वो अपना हाउस होल्ड, एक समय था जब 10,000 रुपीज़ में चला लेता था, अभी वो एक्सपेंस का अमाउंट बढ़ गया है. एजुकेशनल एक्सपेंस पहले इतने थे, अभी बहुत बढ़ गए हैं, कम हो गए. सो ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन. बट ओवरऑल इकोनॉमी का जब हमें इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, दीज आर बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस एंड दोज कैलकुलेशंस यू आर गोइंग टू लर्न इन this particular chapter, that is index numbers. Okay, so as discussed, index number will make you able to calculate the inflationary index, how the prices are changing in the economy and how the inflation is calculated at every time. Now regarding the macroeconomics part, macroeconomics is, as I said, regarding the economic situation of the nation. So nation basis पे we need to know what all things that for the nation or for the whole world, for the whole economy, things which are required and which can be understood. As एक बहुत छोटा सा example, if I talk about a household, एक हाउस होल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इनफ्लो कहाँ से होता है और आउटफ्लो कहाँ से होता है. सो द इनफ्लो इज फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ दैट हाउस होल्ड. मे बी समवन इज डूइंग सम जॉब और इट कैन बी बिजनेस इनकम, बट द आउटफ्लोज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, राइट. It is about a household, it is about a organization also. So these part are covered under micro. But क्या एक nation को चलाने के लिए कुछ income source होते हैं? Do a country also need income to run the government? Yes. Our government needs income because there are a lot of government expenditure which they need to take care in a given span of time. The span of time is normally a year. So what are the sources of their income? Right? What are their expenses? How they utilize the income? How they can circulate the income? What are the sources? How the overall economy works? So your macroeconomics part is divided into 4 parts. Number 1 is national income. Number 2, public finance. Number 3, money market and capital market. And number 4 is foreign trade in India. Just to add on, because in CA Intermediate, I also teach one more subject, financial management and economics for finance. And these are exactly 4 chapters which are there in CA Intermediate in economics for finance also. Yes, the difference is the length, the content and the understanding part. There is a difference. यहाँ पर बहुत बेसिक है, वहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड है. अब इन सारे चैप्टर्स में है क्या? नेशनल इनकम. National income is that tool or it gives us that calculation to the government and to the general public to know कि country का economy है कैसा. हम सब ने पढ़ा था regarding developed, developing and underdeveloped nation. But what all are the criteria that decide all these things? So वो सारी जो criteria हैं उसमें income is one of the major important factor. और वो इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल है, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबसे इनकम पूछ लो, उसको ऐड कर दो. बट इन कंट्री लाइक इंडिया, डू यू थिंक इट इज़ ईजी? एक फैमिली से जब जाकर हम उनसे उनका इनकम पूछते हैं तो भी हमें एग्जैक्ट और करेक्ट फिगर मिले या ना मिले उसकी गारंटी नहीं है. सो हम पूरे कंट्री के सिटीजन्स की इनकम की बात कर रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट ऑल आर द वेज एंड मीन्स एंड हाउ दिस इनकम गेट्स सर्कुलेटेड. दिस इज द चैप्टर विच विल टेल यू अबाउट दैट.
In public finance of India, it tells us about the different market issues. Why government need to intervene? दो वर्ड्स हैं हम लोगों ने सुने होंगे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. देन देयर इज अनदर वर्ड विच कम्स इन बिटवीन इज बजट. हर साल फाइनेंस बजट आता है, वो किसका पार्ट होता है? व्हाट आर 5-year plans? All these forms and all such things you are going to learn in these 2 chapters. Yes friends, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि मनी मार्केट कैसे वर्क करता है. मनी मार्केट इंक्लूड्स योर बैंक्स, इट इंक्लूड सेंट्रल बैंक, इट्स इंक्लूड कमर्शियल बैंक्स. कैपिटल मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के बारे में यू विल गेट टू नो. सो it's a huge learning process in this year's time, and there are lot of interesting things which are coming up. Books में जो चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बोला जाता है कि यू जस्ट रीड इट, यू लर्न इट एंड यू जस्ट पुट इट इन द आंसर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉरेन ट्रेड, imports, export, role of import and export, how it can be beneficial for the nation, what all are the drawbacks, every detail यहाँ पर बेसिक डिटेल आप लोग सीखेंगे. और बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे CA इंटरमीडिएट में टू ऑल द CA स्टूडेंट्स. Maybe in 2 or 3 days I'll also get another video for CA intermediate on this subject only. So all those people who are interested in doing CA, they can watch that video to know in detail about the subject. But guys, let me tell you, microeconomics जितना हमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है, macroeconomics उतना ही हमें विजन देता है regarding the whole economy. Few more things that I would like to discuss with you people are regarding the situation and what all things are happening. सबसे पहले, I hope you all are safe and sound at your home. You all are taking care. And ये जो situation है, अगर ये नहीं होती तो this would have been the time जब ZPA में we would have begin with our classes, और अभी हम ये सारे basics पे personally मिलके बात कर रहे होते. Many of you know that we have 2 branches, one at PCMC and another is our head office which is at Navi Pet. So Pimpri Central branch में I take this subject as well as accountancy at 11th and 12th level, और head office में अखिलेश टाका सर ये subject लेते हैं. नाउ सिचुएशन जो है हमारे सामने है, दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन जिसके अंदर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि इतने दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट यू ऑल यूज दिस टाइम वेरी नाइसली, स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली एंड do little time, give little time to your books as well. हम लोग हमारी तरफ से we are trying best to give daily basis पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, and will be keep on doing it. But again I would tell you, even if जून में भी proper classes begin होते हैं तो भी will be in very good position and your syllabus can be completed, right, of all the subject. Apart from that, these induction videos are given to you and will keep on posting things. दोनों locations पे दोनों teachers से you can talk, you can discuss. मेरे contact details मैंने पिछले वीडियो में दिए ही थे, इस वीडियो के end में you'll again get that. And hey guys, at the end I would just like to suggest you all to stay indoors, stay safe and keep visiting our YouTube channel for more updates, more videos and more details. Thank you so much.